Breaking news, big breaking. Iran closes Strait of Hormuz. Impact on global and Indian economy. Hello everyone, this is Dr. Samad and you are watching Dr. Samad Global. The Middle East war is now shaking the global economy. Impact of closing of the strategic Strait of Hormuz due to the ongoing US-Israel versus Iran conflict, sparking fears of a massive oil supply shock worldwide. Congress leader Sri Pawan Khera in a press conference has raised serious questions about the Indian government's preparedness and warned about the economic consequences for India. Stay with Dr. Samad Global for the fastest analysis on geopolitics and global economy. Let us break it down now. Impact on global energy markets. Addressing the media, Congress leader Sri Pawan Khera said that the closure of the Strait of Hormuz would severely impact India and the global economy. He stated that 38 Indian ships and nearly 1,100 Indian sailors are reportedly stranded, while goods worth around rupees 10,000 crores are stuck due to the disruptions of maritime routes. आर्थिक पहलू ऐसा जो मेरे और आपके घर के किचन तक आता है, वो इस वॉर, इस गैर कानूनी युद्ध का आर्थिक पहलू एक एक भारतवासी को झेलना पड़ेगा। मैं आंकड़ों के साथ मैं आपको बताता हूं कि व्यापारिक पहलू क्या है और क्या नुकसान हमें इसका होने वाला है। आप आइए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है, ईरान ने दो देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं फिर रिपीट करता हूं। शिपिंग एसेट्स वर्थ 10,000 करोड़ रुपीस, 38 शिप्स एंड 1100 सेलर्स आर स्टक। भारत की जो इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन है, उसने भारत सरकार से आग्रह किया है, गुजारिश की है कि साहब मदद कीजिए। भारत सरकार मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ भारत सरकार ने अपने तमाम, एज दे से इन इंग्लिश, ब्रिजेस हैव बीन बर्न्ड, सारे पुल तोड़ दिए हैं ईरान के साथ। अब आप किस मुंह से उनको कहे कि साहब हमारे ये 1100 सेलर्स, हमारा 10,000 करोड़ का सामान, हमारी 38 जहाज आने दीजिए? नहीं कह सकते। The Strait of Hormuz is one of the world's most critical energy corridors, carrying about 20% of global oil supply. Its disruption has already pushed oil markets into uncertainty and would trigger inflation across global economies. For India, the concern is even greater. Nearly 40% of the Indian crude oil imports pass through these narrow passages, making the country highly vulnerable to supply shocks and rising fuel prices. Experts warn that if the crisis continues, fuel prices, transport costs, and overall inflation may surge, directly affecting the daily life of Indian citizens. On the other hand, the government says it is exploring alternative energy supplies, but the geopolitical tensions in the Gulf region continue to threaten global energy security. Lifeline of global energy markets. The biggest global economic impact comes from the energy supply disruptions. A key geopolitical choke point is the Strait of Hormuz. This narrow waterway carries nearly 20% of the world's oil supply, a large share of global natural gas exports. Because of the conflict, shipping traffic in the strait dropped drastically. Tanker movement declined sharply and oil prices surged rapidly. Within days, Brent crude oil prices jumped from about $70 to over $90 per barrel due to fears of supply disruption. If the Strait of Hormuz is blocked completely, experts warn that oil prices could rise
dramatically and trigger global inflation and economic slowdown. This is Dr. Samad Global bringing you the most important updates on geopolitics, global economy, and strategic affairs. If you want clear and powerful analysis on international conflict, financial trends, and digital education, please subscribe to Dr. Samad Global, like the video and share your opinion in the comments because the world is changing fast and knowledge is power. Thank you for watching.